हमें अपनी फ़ोटो पे जाके सिंपली अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीधा शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। चलो जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। सभी लिंक मिल जाएगा, सभी जो मैं यूज़ करूँगा PNG भी आपको डन के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। फिर आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स
फिर आपको डन के ऑप्शन में क्लिक करके आपको सेव करनी है फ़ोटो। तो देखो अपनी पिक कितनी बूम बन चुकी है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।